Okay, so let me share that again. So what we have seen here, that the bandwidth should be very greater than FM. So based on the sampling choice be greater than or equal to twice of FM, but here the bandwidth what we are getting here should be greater than very greater than FM. So we have got this bandwidth very greater than FM from the relation what we have derived earlier, that the Fmax or the frequency of this signal. Okay, so ये जो सिग्नल हमें यहाँ पे दिख रहा है, one minute, just wait for a minute. ओके, सो यहाँ पर अभी हम हमें जो सिग्नल यहाँ मिल रहा है दैट इस पिक्चर में आप लोग जो देख पा रहे हो, let me annotate here. इस फिगर में जो आप देख पा रहे हो, विद इन दिस फिगर ये एक पैम सिग्नल को शो कर रहा है जहाँ पर टी ऑन पीरियड शुड बी इक्वल टू टी ऑफ पीरियड. ऑन टाइम इज इक्वल टू ऑफ टाइम. अगर यहाँ देखें तो इस पूरे पीरियड के लिए हम फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, बेस्ड ऑन दी टो. ओके, इस टो वैल्यू पर ये डिपेंडेंट है. सो विच इज इक्वल टू 1 by 2 tau. So based on this value, we have got that bandwidth is greater than FM. So this is the demerit of one of the demerit of this PAM signal. So now, what are the disadvantages of or the drawbacks of the FM signal? The drawbacks of this PAM signal. So let me share the whiteboard so that I can show you there. Okay, so what are the drawbacks of this PAM? So फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था, जो हमें जो पल्स स्ट्रेचर, मतलब वो जो पल्स स्ट्रेचर की तरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट को. सो दैट पल्स ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट पल्स जनरेटर नेटवर्क, उसके कारण क्या होता है, देयर विल बी amplitude and phase variation. So due to the transfer function of pulse stretcher network, there will be which causes the amplitude and shape variation. Okay, so we can write it as due to what, the transfer function TF, the transfer function of pulse stretcher network which causes amplitude and phase variations. So due to these amplitude and phase variations, so this is the limitation that the transfer function pulse stretcher network which causes amplitude and phase variations. So in variations को कम करने के लिए
here are equalizers are used. So equalizer are used to get rid of this demerit. And second drawback is what? The information in amplitude which can be easily affected by noise. Okay, so here information in amplitude which is easily affected by noise. Okay, so as we are using flat top, so एक इसका मेरिट ये भी है कि फ्लैट टॉप जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे आसानी से और सही तरीके से नॉइज को एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन इसमें ये एक डिमेरिट भी है कि दैट देयर आर नॉइज प्रेजेंट in the pulses. Okay, so in the above and in the lower portion also there are noises which may be present in the pulses. Okay, so like this. So what you can observe here, these are the noises which are present over the flat top portion of the samples. So due to these noises, the problem of interference. Okay, so and crosstalk. So crosstalk. So these are the limitations. Again, there is a third limitation, that variable power. वेरिएबल पावर क्यों? क्योंकि जो हम सैंपल्स ले रहे हैं वो सैंपल्स डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर? ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और जो सैंपल्स हमें मिल रहे हैं तो वो सैंपल्स कोई मतलब जो सैंपल्स हैं उनका हाइट वेरी हो रहा है। तो ड्यू टू दिस वेरिएशन इन द हाइट ऑफ द पल्सेस, द power is varying nature. Okay, so this is a limitation also for that. Due to the, so this is due to the variable power, which is due to the changing of amplitude of message signal. Okay, so these are the limitations of the PAM signal. For today, this is over now. In the next class, we will go through the PTM, that is pulse time modulation, where we will see the pulse width modulation and PPM. So the pulse position modulation can be obtained by using what? By using the PWM or the PDM itself. So pulse duration modulation का इस्तेमाल करके ही हम लोग PPM देखेंगे, and we will see the next part, that is the PDM and PPM in the next class. So for today, from my side it is over. So is there any questions or any query? Actually जब तक आप थोड़ा खुद से इसके थ्रू नहीं होगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिपीटेशन चाहिए। रिपीटेशन मतलब थोड़ा रिवीजन चाहिए। हो सकता है मे बी that you are not getting it in full manner, so you will get it only when you will go through it multiple times. Okay,
So आज के लिए इतना ही है. In the next class, we will meet with the next part. Okay, thank you. Thank you, sir.